ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्माकम् अद्यतनविषयः अस्ति अभ्यास चतुर्विंशतः 24। पूर्वे वयं अपश्यामः मौनस्वरः इकोयणचि एचोयवायवः आदिगुणः वृद्धिरेचि च अकः सवर्णे दीर्घः च। अद्यतनसन्धिः अस्ति एङः पदान्तादति। पुनः पश्यामः। प्रथमः वयं पश्यामः अभ्यासशब्दानि च प्रत्यये च। अद्यतनशब्दानि संज्ञाशब्दानि सन्ति। वारी 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 इति इकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति। वारी इकारान्त पुल्लिङ्ग। पेज् 48 840 अभ्यास 24। शब्दानि सन्ति। वारी वारी इति इकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति। हस्तः दन्तः। हस्तः हैंड हाथ। वारी मतलब जल वाटर। दन्तः दांत टीथ। ओष्ठः ओष्ठ लिप्स। अधरः लोअर लिप नीचे का ओष्ठ। स्कन्धः कंधा शोल्डर्स। कंठः गला थ्रोट। केशः बाल हेयर। नखः नाखून नेल्स। पादः पैर फीट। दीज आर ऑल सर्वे शब्दानि पुल्लिंग अकारान्त पुल्लिंग शब्दानि सन्ति। हस्तः दन्तः ओष्ठः इत्यादि। वारी इति ईकारान्त पुल्लिंग। अधुना नासिका नासिका ग्रीवा जिह्वा जङ्घा सर्वे आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दानि सन्ति। नासिका नाक नोज। ग्रीवा गर्दन नेक। जिह्वा जीभ टंग। जंघा जांग चेस्ट थाइस जंघा थाइस। लाइक पुरुष सूक्तमपि पुरुषसूक्तायामपि ब्राह्मणो ओस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरुजनस्य द्वैषः। ऊरुज सेम इज जंघा। मुखम मुह माउथ मुह। उरस्थलं छाती चेस्ट। हृदयं हृदय हार्ट। उदरं पेट स्टमक। शरीरं शरीर बॉडी। उरस्थल मुखम उरस्थलं हृदयं उदरं शरीरं सर्वे नपुंसकलिंग शब्दानि सन्ति। तो अधुना अद्यतन शब्दानि पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग च सर्वे शब्दानि सन्ति अद्य। शुचि स्वच्छ पवित्र प्योर। हस्त is like pada ramavат अकारान्त स्त्रीलिंग। राम राम पुल्लिंग। अकार राम 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 रामः हस्त हस्तौ हस्ताः इत्यादि। नासिका जंघा रमावत। रमा रमे रमाः आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द। वारी शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 27 पेज 71 एकसप्तति। अहं पठामि।
पेज 71 एंड ऑफ द पेज वारी इति इकारांत नपुंसकलिंग शब्द अस्ति इकारांत नपुंसकलिंग वारी हस्त दंत इत्यादि पुल्लिंग शब्द वारी प्रथमा विभक्ति वारी वारिणी वारिणी द्वितीया वारी वारिणी वारिणी प्रथमा द्वितीया प्रथमा च द्वितीया च सम्य सेम बराबर किं भवति एकः एकः तुल्यः तुल्यः यूजुअली फॉर अमाउंट्स न हाँ एकः अस्ति सन्ति तृतीया विभक्ति वारिणा वारिभ्यां वारिभिः चतुर्थी वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः पंचमी वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः षष्ठी वारिणः वारिणोः वारीणां सप्तमी वारिणी वारिणोः वारिषु संबोधन हे वारी अथवा हे वारे द्वय उभयोः उभयोः स्तः हे वारिणी हे वारी हे वारिणी हे वारिणी हे वारिणी तो द्विवचन हे वारिणी ह्रस्व वारिणी दीर्घ बहुवचन हे वारिणी ह्रस्व दा धातु के लट लोट लंग के रूप स्मरण करो देखो धातु संख्या 24 पेज नंबर 95 पंचनवति 95 दा धातु is जुहोत्यादिगण दा धातु is on the right side लट लोट लंग अद्यतन विषय लट लकार ददाति दत्तः ददति ददासि दत्तः दत्तः ददामि दद्वः दद्मः इति लट लकारे अस्ति लोट लकारे ददातु दत्तां ददतु देहि दत्तं दत्त ददानि ददाव ददाम तो त्वं देहि यू गिव लोट लकार अस्ति अथवा लट लकारे सः ददाति ही गिव्स शी गिव्स सा ददाति अहम ददामि अहम धनम ददामि आई गिव मनी इत्यादि लंग लकारे अददात् अदत्ताम अददुः अददाः अदत्तम अदत्त अददाम अददा अदद्व अदद्म अद्यतन विषय अस्ति लट लोट लंग लट लोट लंग श्वः लिट् विधिलिंग च लिट् च श्वः अस्ति अद्य इति सम्यक् नियम 61st नियम is sandhi we will see this later after finishing pratyaya so नीचे 62 first नियम द्विषष्टिः 62 जाना चलना अर्थ की धातुओं और अकर्मक धातुओं से त प्रत्यय होने पर कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया होती है ह्यः वयम अपश्याम नियम 59 सेड भूतकाल में भूतकाल अर्थ में धातु से त प्रत्यय होता है हाँ 60 नियम षष्टिः दिस नियम से अकर्मक धातु से त प्रत्यय होने पर कर्ता में तृतीया क्रिया में कर्ता में तृतीया और सकर्मक धातु में कर्म में प्रथमा परंतु अद्यतन विषय अस्ति कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया अस्ति जब व्हेन देयर इज जाना चलना अर्थ सो फॉर एग्जांपल जैसे सः गृहं गतः yesterday we saw examples सः भोजनं खादितं किंतु किमर्थं भोजनम् इति नपुंसकलिङ्ग शब्दः अस्ति खादितम् अपि परन्तु अद्य सः गृहं गतः सः कर्ता पुल्लिङ्ग शब्दः अस्ति गतः अपि पुल्लिङ्गवत् गृहंवत् न पुल्लिङ्गवत् अस्ति सः गतः गतं नास्ति सः गृहं गतः सो व्हेन देयर इज जाना चलना अर्थ के धातु इट विल फॉलो द कर्ता सः गृहं गतः सः विद्यालयं प्राप्तः सः आगतः सः सुप्तः सः मृतः ऑल दिस so here when we say saha vidyalayam and we say sa vidyalayam savidyalaya saha
किन्तु किमर्थं व्यञ्जनमस्ति कान्सनेण्ट् Yes. but yes, it is okay, it is not wrong to write saha, it is the final role, in the final way sir they write. सूचना त प्रत्यय से बने कुछ प्रसिद्ध रूप ये हैं प्रत्यय विचार. So all this they have given रूप अस भूतः आप आप्तः ईक्ष ईक्षितः कथ कथ कथितः कृ कृतः everything they have given like छिद छिन्नः जन जातः न्या न्यातः नश नष्टः वद उदितः सर्वे शब्दानि इयं सन्ति अत्र इह सन्ति सर्वे शब्दानि अत्र सन्ति. अस्तु तर्हि नियम एकषष्टिः वयं पश्यामः सन्धि विचार. सन्धि अद्यतनसन्धि अस्ति एङः पदान्तादति. पद शब्द रूप या धातुरूप के अंतिम ए या ओ के बाद अ हो तो वह हट जाता है. अ हटा है इस बात को बताने के लिए अवग्रह एस अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाए. फॉर एग्जाम्पल जैसे लोके अस्मिन अ हट जाता है. द अ गोज अवे इफ ओनली द फर्स्ट वर्ड एंड्स इन ए और ओ. Then if the second word begins in a, then the a goes away and avagraha comes. Lokesmin. Swamiji keeps saying lopaha. Is this No, when it falls away? So tasya lopa you can say falls away. Yeah. Here it will be visarga lopaha. Correct. Here it will be visarga. But this lopaha, the main lopaha point comes in later sutras. This is all Sandhi Sutra. Yeah. The other sutras, like for example with Adhikarana Sutra and all, will have a lot of lopahas. Maybe they later will come. Here, dropping a, no? Yes. So here also you can say Visarga Lopaha Bhavati Lokesmin. Parantu Visarga Lopaha Bhavati cha Avagraha. Avagraha Agachati. Lokesmin. Hareva. Kopi Prashna Astiva. Kopi. That Kopi. Then Vishnova, Ko Ayam. This is also very easy. This is like Akasarva and Mediriga. Do you know the number? Yes. I don't remember by heart, but we can check. Enga Padantadati. Six 109. We will see this again after finishing Abhyasa. We will see once more with Laghu Siddhanta Kaumudi. अभ्यास चतुर्विंशति अधुना पेज 49. उदाहरण वाक्य ट्रांसलेशन. शुचि वारी पिब. हरिजी भवान् वदतु. शुचि वारी पिब. शुचि ड्रिंक क्लीन वाटर. प्योर वाटर, क्लीन वाटर. सम्यक्. अवंतिकाजी शुचिना वारिना स्नानं कुरु. शुद्ध स्नान से स्नान करो. शुद्ध पानी से स्नान करो. स्वच्छ जल से. सम्यक्. शुचिना वारिना इति तृतीया विभक्ति अस्ति, परन्तु मीनिंग विल बी लाइक पंचमी. शुद्ध जल से. सम्यक्. बहु समीचीनं. सुंदर जी वदतु भवान्. शुचिने वारिणे नदीं गच्छ. Shuchine will be Varine. So it's fourth. Samyak. Varine. Chaturtha. So therefore Chaturtha is Ramaya. No? Ramaya. So therefore English wise it is pure go to the pure water in the river. Go to river for pure water. Go to river for pure water. So Varine. Varine. हरिजी वदतु भवान्. रामः गृहं गतः. रामः गृहं गतः. Rama has gone home. सम्यक्. अवंतिका जी. कृष्णः गृहं आगतः. कृष्ण घर में आ गए. सुंदर जी. उसने नदी प्राप्त की. He obtained the river. सम्यक्. He went to the river. प्राप्त. He has reached, we can say. Yeah. But this is praptasya prapti, not apraptasya.
रामेण रावणस्य मूर्धा चिह्नः हरिजी वदतु भवान् रामेण by Rama, Ravana's head is broken. सम्यक् बहु सम्यक् बहु सम्यक् अवन्तिका जी रामेण ब्राह्मणाय धनं दत्तं जलं पीतम् इत्यादि रामेण ब्राह्मणाय जलं धनं दत्तं किं भवति रामेण ब्राह्मणाय धनं दत्तं राम ने ब्राह्मण को धन दिया हाँ जल पीने के लिए दिया हाँ भार नीतम एक सेकेंड इट विल बी रामेण सो राम के द्वारा तृतीया विभक्ति अस्ति रामेण द्वारा राम के द्वारा ब्राह्मण को धन दिया गया सम्यक जल पीतम पीने के लिए जल दिया गया हाँ सम्यक इत्यादि भार हाँ भारानीतः वदतु भवती भार को उठाया गया हाँ वचनम उक्तम हाँ। बोला गया हाँ शब्दों को बोला गया इत्यादि there are many there are like 15-20 are there but many are simple only so all this राम के द्वारा रामेण तृतीया विभक्ति अस्ति सुन्दर जी किं भवति देवः पुत्राय देवः पुत्राय so therefore धनं ददाति हाँ so देवः देव हाँ भगवान I guess here हाँ whoever हाँ देव पुत्र को धन देता हाँ धन दिया धन देता है हाँ लट लकार ददाति ददतु ददातु ददातु is this one two है ददातु लोट so therefore धन दो और अददात धन दिया यस कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा त्वं शिष्याय धनं ददासि देहि अददाः वा अहं वदामि त्वं शिष्याय सुन्दरजी वदतु भवान् त्वं शिष्याय तुम शिष्य को धन दो ददासि दे रहे हो दिस इज लट ददासि इज लट देहि लोट अददाः दिया लंग okay so lat lot lang all three are given in one line okay sanskrit banao we will see only one hari ji to bhavan ram swachh jal pita hai संस्कृत भाषायां किं भवति रामः स्वच्छ जल पिबति वारी शुचिवारी पिबति अवंतिका जी भवती वदतु तू स्वच्छ जल ला त्वं स्वच्छं जलं सॉरी वारीं आनय सम्यक बहु सम्यक आनय सुंदर जी ख प्रथम विशिष्य विद्यालय गया ख प्रथम सो शिष्यः विद्यालयम् अगच्छत् सम्यक हरिजी वदतु भवान् त्रयोदश ग का प्रथमा व दान देता है हरिजी भवान् वदतु सः दानं ददाति अवंतिका जी चतुर्दश तू धन देता है क्या होगा त्वं धनं ददासि सम्यक बहु सम्यक ददासि सुंदर जी अंतिम 21 मैंने निर्धन को धन दिया 21 मैंने तो नॉट अहम मैंने अहम निर्धनाय स्त्रीलिंग no because for fourth case chaturthi vibhakti nirdhanaya to the निर्धनाय धनं ददामि न दिया तो ददामि स्म सम्यक् अशुद्ध टु शुद्ध अहं धर्मं ज्ञातः दानं दत्तः मया धर्मं ज्ञातः दानं दत्तं because तृतीया विभक्ति should be used for त प्रत्यय
when it is not janati chalanatmaka dhatu like that, unless it is gaccha dhatu, gam dhatu or chalanatmaka dhatu, tritiya is used, and like this. So aham dharmam jnataha will be maya dharmam jnataha danam dattam. Tvam snanam kritaha bhojanam kaditaha na. Tvam snanam kritam bhavati kimartham ye. This is not chalanatmaka dhatu and it has to follow karma. So kritam, snanam is napumsakalinga, like bhojanam is napumsakalinga, so bhojanam kaditam, snanam kritam, not kritaha. दो ग को बहुवचन में बदलो. This will be, we can do one each maybe. हाँ, हरि जी भवानेव वह दान देता है. बहुवचने किम भवति? वह दान देता है. सः दानं ददाति. बहुवचन. Which one? Saha? 13. 13. 13, 1 3, right? हाँ. सादानम. सह तौते ते दानम ददाति. ददाति दत्तः ददति. तो सादान देता है. ते दानम ददति. अवंतिका जी भावती वदतु 14. तू धन देता है. बहुवचने किं भवति? त्वं एकवचने अस्ति. बहुवचने यूयं. सम्यक्. यूयं धनं दत्थ. लट् लकार अस्ति, तो दत्त. हाँ, दत्त. सुंदर जी भवान वदतु अंतिम. मैंने निर्धन को धन दिया. वयम so निर्धनेभ्यः वयं निर्धनेभ्यः धनम and दद्मः. दद्मः इति लट् लकार अस्ति, परन्तु इह लोड्रिङ्ग् लङ् लकार. वयं निर्धनेभ्यः धनम् अदद्मः. वयम् अदद्मः. ओके, फाइनल संधि. I will share screen. Six 109. Engah padanta dati. Engah padanta dati. Engah. And there is A and O. Padantat. Engo ati pare purva rupam ekadesha syat. Padantat, from the first pada, antat, engaha, A and O, ati pare, purva rupam ekadesha syat. When there is purva rupa, a is there, that will go away, and that becomes avagraha. Hare ava, Vishnu ava. Examples will be given here. Vane asmin, Vishnu ava, Vishnova. This here they again Vishnova, you have to add avagraha. Here avagraha will be added. Like this. Pachete atra will be pachete atra. Like that it will become. Vane asmin Vishnova. The main usage of this avagraha more or less in Vedanta comes in vidya avidya. When avidya is part of the second word and there is sandhi, that avagraha will come. Because when this avagraha comes, we don't see it, we'll just think the opposite. Complete opposite will be taken wrongly. So this avagraha mostly, but in other places also it comes. But this is the main differentiating. Some places it comes twice. That means double. So this first also is a and the second is also a. Both come, then there is double avagraha. If there is one avagraha, that means O and A. That will be a different sutra, I think, for a double avagraha. This sutra is only A and O plus A will become
avagraha. The examples are very easy, but we will anyway see. Hare ava, hariji, hare ava, kim bhavati? Hareva. Hareva. Bhavaneva, hariji, ko atra? Kotra. The main thing here is to have that super subtle kind of at the middle between the two. Kotra is correct, but very subtle it has to be. It is basically silent only. But some kotra. You have to see that very little. Avantikaji, yes. Avantikaji bhavati vadatu grihe asmin. Kim bhavati? Grihe asmin, samyak. So api. सोपी. हाँ, सुंदर जी वदतु भवान् के अत्र को अयं कोयं. So with little practice it becomes very easy, but we have to, it is basically silent only. We're not supposed to say it, but we have to show that it is there. Okay. कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति चेत् वयं श्वः मिलामः, मेलिष्यामः. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः. शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ओम शांति शांति शांति. ओम.